तो मिस्टर गोपाल वर्मा, जी सर। मेरा ये सोचना है कि जैसे आपने नाम रखा है क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, राइट? जी जी। तो रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन में हाउ एग्जैक्टली यू हैव डेवलप्ड द प्रोटोकॉल, और इट इज ए नी जर्क रिएक्शन के कुछ मालूम पड़ा और आप चले गए और कुछ मदद करने की कोशिश की? सो जी I feel कि can we have little more structured way of responding, and it is very fortunate that our legal system provides fortunately that mechanism. Though I am really surprised that how the government and police kept those provision very secret from the knowledge of people. But जी। Section 39 CRPC is one of the very important section which यस। cast very important duty on each and every citizen यस। by any channel. If that anybody come to know any cognizable offense and there's a list of certain offenses, if those offenses has come to your notice and still if you have not informed, then you can be prosecuted for it. You यस। can be even sent to jail for that. And in normal offenses, the onus of proving guilt beyond reasonable doubt, it lies on police. But especially in case of the Section 39 CRPC, the jurisprudence has been done upside down. And it says that you are innocent, it has to be proven by you. Are you getting my जी point? जी जी सर। So making use of this clause, if we can provide a channel so that people can really report the matter, then reporting the matter could be done through very smart system, right? यस सर। जी And जी। say you are sitting here in Hamirpur, Uttar Pradesh, यस and सर। I presume that your lookout is not Uttar Pradesh or Bundelkhand. Your यस सर। lookout should be for the whole country. जी So there, since we know that every 10 kilometer there is a change in dialect, and we must appreciate that understanding language becomes difficult, especially if somebody is speaking in a local dialect, right? जी। यस सर। यस सर। So then we have to bring an element of the language interpreter. It means in ओके। each area there should be the language interpreter. यस। Then even if we are using artificial intelligence to put sections of the crime, still we जी can have a people or from the legal background who can help in extracting all details and can further help in applying sections of the crime, right? यस सर। And at the same time, whether it's a language interpreter or we take a app or we created a kind of a army which can, I mean, army means here the people, a big people, I mean, set of the people, those who can really, along with their app, they can go and जी they can really uh, help in extracting the details of the cognizable offense, right? यस And सर। there could be system which will be extracting through the audio, video, visual means that could be logged, that could be protected with the hash value, so that it should become almost infallible in court of law. If जी there are the documents, then it should facilitate having those documents, and the person may be, and we must be sensitive that in India you are not talking of people, those जी who are literate. There may be a number of the people from the village area, and in any case in Indian system they are the biggest sufferer, because जी sometimes even they are beaten, they are bleeding, and police sometimes don't really send them even for the medical examination. यस That, सर। I mean, forget about Johanna registering of the FIR, even the minimal human courtesy sometimes not extended, right? जी So सर। जी बिल्कुल। these people need our support in a
much better way. Do you agree with me? जी बिल्कुल. And then yesterday I was explaining you कि once that content had come, we should be in position to route it through our system and नहीं नहीं maintaining the evidence of our routing. So that first it should go to the Thanedar because it is his primary responsibility under section 154(1) of the CR. Now, yes sir. there could be some locking time, waiting time for the 3 days to 7 days. If Thanedar fails to take a call and if he did not register the offence, despite the fact there is a vocally and a very speaking facts are available which are telling it is a cognizable offence, right? Then Yes right system can take those details along with if even if required certain affidavit could be taken, right? That right sir. and even affidavit from the system can also be generated. Okay, this content was taken, I hereby on oath say that this content was sent to the Thanedar through these means and he did not take his cognizance and now it is your legal responsibility under section 154(3) and that then SP may take a call. If SB take a calls, he can send it to the same hierarchy or he may depute anybody else. And if anybody else is deputed, he will automatically will get the power of the station house officer, right? So even if Yes he sir. is entrusting investigation to a head constable, that head constable would be having all the power of SHO and he need not to go to the same SHO who did not register the offence and plead for his signature. So law is Right. very clear. The nominee of the SP, irrespective of the his jurisdiction, he will be for this particular case will have the power of SHO, right? Yes yes Now yes. even SP does not pay heed and he did not do or discharge his responsibility, and there may be n number of the reasons, including political pressure, right? Right sir. So there may be political pressure or other pressure, or even it may be pure judgment of superintendent of police, right? He feels Right that no offence is made out, and probably he did not find it necessary to react even, right? right sir. Then the system may help to take it to the court as the law provides under section 156(3). Now we have to see that 156(3), since there is no 39, then probably Yes certain kind of the affidavit and some certain kind of the empowerment from the complainant may be required to take up that case in the court, right? right sir. Because as far as police is concerned, every citizen, irrespective of the fact whether he is victim or not, the offense may be reported as a responsible citizen of the country, right? And Right sir. if the citizen is not behaving in a responsible way, he could be prosecuted for that. Is that clear? Yes sir. So, Clear. so probably we have to really appreciate that whether 156(3) requires the victim to go or third party can is also allowed. If third party is not allowed, then we have to conduct certain additional codal formality that I hereby depute so and so to plead the case on my behalf or whatever, right? So that Yes sir. the matter could be taken to the court through 156(3). Now, even if the court she did not pay the right kind of or did not really hear or did not do his legal responsibility, then law further provide we can have the recourse as a special case to the High Court under Yes. section 482 of the CRP. Now Yes. let's say even you are not getting relief from High Court and you feel that facts are so flagrantly wrong, so flagrantly violative that relief, I mean, we can really approach Supreme Court under the PIL for the relief, right? जी जी जी. So this could become a legal course of action to help out the victim. Now, secondly, I would like that we are having administrative responsibility also. So SP is responsible for the conduct of SHO, and if he does not do the job as he is expected to do, in addition of the legal responsibility, he is having
administrative responsibility also, right? Ji. So Right. SP can take his explanation, or then even we can put it collective also, that we are saying that this Thanedar has not done his duty, not in this one case, he has not done in 10 cases also, because you are having the 10 cases with you in which that Yes. particular Thanedar has not done his job. So you will say that this particular Thanedar is in the habit of not doing the legal or discharging his legal responsibility, and he is shirking his responsibility. So he is liable to be prosecuted administratively also, right? Right. So this way we can take it to the SP, DIG, IG, DG, and even Home Department also, and if required, even to the Chief Minister also, right? Right. This is now the administrative responsibility which we can provide through our portal, through our app, right? Yes. Right, Now, sir. there will be the third responsibility, that these details should be compiled, and we can make certain question answer taking advantage of the legislative accountability of the government. When you are approaching through a member of legislative assembly with the hard facts, though it Yes. will be very difficult for the government to close his eyes, because defending these facts in the house would be very difficult for the government, right? Right, sir. Even if it could defend for one session, in the next session you will be having few more cases. So you will say that case, refer my that question. Now the his जो है ना inaction has increased from 500 to 1000, right? Right. So we can use the legislative accountability in making government accountable for the policing. Now, this is the third kind of the accountability which I would like that Crime Free Bharat intending to do. And if your crime research and investigation can really sincerely do this kind of the job, and these kind of the processes could be involved or could be made through the uh, website and through the app also. Yes. And I will prefer that in addition of the website, we must have app, because that app could be downloaded by the Crime Free Bharat volunteers, and they Okay. can become the facilitator, right? Yes, sir. Yes. So they can even go to the thane, जो है ना, village or mohalla or a house. The only Yes. way that we should get information, that there is some information about the cognizable offense, and the person may not be comfortable or may not be smart enough to communicate through making use of the gadget. Then our volunteer will go, and he will become an additional witness to the process of FIR, right? Yes. Ji, sir. Now, so far, we have spoken about the three accountability. One is the legal accountability. Another, we talked about administrative accountability. Thirdly, we talked about the legislative accountability. Now, I am talking about the constitutional accountability. You have to appreciate that every government doing policing is not his wish. It is the responsibility which has been thrust upon to the state government by the Constitution under Schedule 7, List 2, Entry 2, right? Right, sir. And if, say, there may be aberration in one or two cases, if it is happening that 50%, 60%, 70%, or 80% cases, people are not getting relief and the cases are not being registered, or cases are being registered at the intervention of the seniors, politicians, or at the intervention of the money, or money is playing a role in taking cognizance. In that case, since you are already compiling this result, you can send a monthly report of the whole state, that not a particular district or not a particular Thanedar, because Yes. now you are, rather you can send off the all states also, to the all state governor also, saying that in these many cases, your state government has not behaved responsibly, and there is a clear-cut failure of constitutional machinery, because government is unable to discharge its responsibility, right, of Right, the sir. policing. Hence,
prayer can be made to the governor that you please verify the facts which are being submitted by me to you, and then please include it in your report which you are mandated to send to the president every month. Yes. Is it making sense to you? Yes. Now let's say that even governor is a political representative and he has to toe political lines and he cannot do the things which political bosses or political command really does not want him to do. So he will be the last person to toe your lines or follow you, right? Right, sir. Then we can bring some pressure through the PIL from the Supreme Court, Yes. submitting the voluminous document to the Supreme Court. कि this is the factual report and there is a clear cut जो है failure of constitutional machinery which in normal course governor should have come to know and should have sent the report, but even when we have given these details to the governor really did not do his part of the job. Yes. Hello. Yes, yes, sir. सुन रहा हूँ, sir. So then under that PIL we can bring that kind of pressure. So now this Yes. much whatever we have spoken, this is only point number one, certainty of registration of FIR, right? Yes, sir. Now then if we talk in a framework of The person crime you free are Bharat, speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को hello, हेलो. yeah, सॉरी सर, सॉरी, वो कान में लगाया था, टच हो गया सर. अच्छा कोई बात नहीं. तो what I am saying, then हमको how we are supporting SHO by making use of the technology. So that support may come, our volunteer may try to help and get the details, right? Even Yes, right. even they can even record the statement and can send it, right? Because Yes. that is admissible because he is witness to that thing, right? Yes, right. So and then technology may help to dig out the evidences where are they. So it requires that we are in position to give the help to the police beyond the what the victim is saying, right? For Right. that we have to have certain powers of the requisitioning and things like that. So for that we can create a service which may be used by the government or the police, but this element can never be thrust on the government. Basically, that will be because they will see it is my prerogative. I may do or may not do. Right. The second element can only be enforced when you yourself is in the capacity of the lawmaker, and you will be in position to make those changes in the law itself. Right. Right. Then third is again uh, video-based distributed trial system, in which we will be having n number of the ad hoc judges as already contemplated in our CRPC, section 13, section 18 and section 21. It gives the power to have more number of judges. So I am saying is we can say that every judge will have one or two cases, not more than that. That kind of the things we can do so that all cases could be decided within 7 days to 30 days. And 30 days is the upper limit. And Yes. nobody need to go to any court. So it will not be costing any expenditure on the government, because government will be only paying revenue stream to the person, to the judge who is discharging his responsibility. He does not require anything else. He does not require any office. And so distributed video-based trial system may be used for ensuring that with certainty that trial shall be completed within 30 days. Then the fourth certainty should be preventive certainty. Again, this certainty can only be there when they allow you to really help them out. तो ये स्थिति वैसी है कि आप घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते हैं. सही तो कहा. वो पानी पीने की स्थिति में है कि नहीं है, या आप उसे पानी पिलाने के लिए आपने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है और यू आर हैविंग द लीगल अथॉरिटी टू डू दैट. एंड उसके लिए एक हमने ऑलरेडी
ड्राफ्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है BPRND के माध्यम से, और जिसका नाम हमने दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, एंड इसका निकनेम हमने दिया है डिजिटल चित्रगुप्त। और इसमें पब्लिक का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा कि आज यदि आपके पास 40% जो है ना कैप्चरिंग है, तो 1 से 2 साल के अंदर आपकी कैप्चरिंग 99% को टच कर जाएगी। देयरफॉर हमारे चित्रगुप्त को हर चीज मालूम होगी। एट द सेम टाइम वी आर इंश्योरिंग राइट टू प्राइवेसी, राइट। तो राइट टू प्राइवेसी को देते हुए आप एक ऐसा चित्रगुप्त दे रहे हैं जो कि अपराधी घर से निकले और वो ये अनुमान लगा ले कि ये अपराधी अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, और इसके साथ में ये लोग हैं, इनकी भाव और भंगिमा से ये मालूम पड़ रहा है कि दे आर आर्म्ड विद द लीथल वेपन, एंड उसके पुराना जो है मूवमेंट के आधार पर इट कैन बी एंटिसिपेटेड कि वेयर दे आर लाइकली टू गो एंड कमिट क्राइम। Those node could be alerted in advance, and those nodes could be anticipating those people will be passing through that node, and they will be confirming to the system that anticipation of the system is right. So we would be in position to prevent the crime with certainty. In beginning it may be 50%, but as the data will increase, we will be in position to touch 99% in say sometime in say 5 years or so. Yes. So there will be certainty that doing crime would not be an option. And then fifth certainty comes, which says when you know everything about the criminal and you are having all the data of the criminals, just like a Chitragupta who knows everything about a universe, then why that person should be allowed to remain as a criminal? Why the different agencies should not go and approach and find out what is his skill set, what are the turning gaps, what are the resource gaps, and then he could be meaningfully rehabilitated so as to become a national resource to the nation. Yes. Right? Yes. Now, I feel हमारा सोच जो है बड़ा होना चाहिए, जैसा हमने एक्सप्लेन किया। हमारा सोच छोटा नहीं हो सकता है। नहीं, हम चाहे उसे पार्ट में अचीव करें। बिल्कुल। हेलो। और आपका तो पूरा लाइफ ही सर उसमें रहा है, आप तो उसमें तो सोच बड़ा है, करना ही करना है। आप सोच बड़ा नहीं देंगे तो आप कुछ इंडिविजुअल्स को राहत दे देंगे, कुछ जो है आप विक्ट्रीज भी पालेंगे, लेकिन आपकी स्थिति वो अधसत्य की मूवी का जो डायलॉग है ना कि यह एक चक्रव्यूह है, इसका भेदन लगभग नामुमकिन है, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत एनर्जी से यदि इसका भेदन कर भी लेते हैं तो यह आपकी व्यक्तिगत विजय होगी। जैसे ही आप परिदृश्य से गायब होंगे, वो चक्रव्यूह अपनी संरचना को पुनः जो है ना रिस्टैब्लिश कर लेगा, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी कहानियों के लिए ही रह जाएगा, उससे जमीनी हकीकत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बिल्कुल सही। तो मिस्टर वर्मा, यस सर, मेरा सोचना ये है कि इफ यू आर फीलिंग इन लाइन, दिस शुड बी द टारगेट, एंड देन देयर कुड बी द वे टू मेक इट हैपन, एंड देन योर फुल टीम कैन ज्वाइन क्राइम फ्री भारत, because this is the intended this is the concept note which has been submitted to government of India, and it is now a national police mission under micro mission 006, and I am the project leader of that mission. But I understand it requires the political acceptability, political commitment, and I am at really loss whether that kind of the political assessment could be there or it could only be a lip service, because everybody is giving ticket to the criminals, everybody is saying कि हमारे आदमी के क्राइम विड्रॉ कर लीजिए, केसेस विड्रॉ कर लीजिए। हेंस क्या वो एक ऐसे पावरफुल सिस्टम को सपोर्ट कर पाएंगे जो कि रूथलेसली जो है ट्रुथफुल होगा, और इट विल बी ऑलमोस्ट रूथलेस इन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इट विल ensure that crime is no more an option. तो छोटे मोटे रिएक्शनरी क्राइम होंगे which will be promptly
registered, promptly investigated, and would be decided within 30 days. Hence, the presence of the crime would not be felt. जी आप कहाँ तक इस बात को सहमत हो पा रहे हैं? मैं सर आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अच्छा। और रही बात हमारी, मैं इसलिए आपसे अनुमति मांग रहा था कि क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ और पूरी टीम को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तो ये जो संस्था मेरा है, मेरा मेरा आपको जो है बर्दाश्त है। आई एम हियर टू सपोर्ट यू इफ यू आर रियली हैविंग द लॉन्ग टर्म विजन कंसोनेंट विद द क्राइम फ्री भारत सर्टेनिटीज। जी, और बिकॉज ये संस्था सूनर और लेटर देश में तो यही लाना होगा। बिल्कुल अब सर, ये बिल्कुल। आज के हमारे राजनेता जो कि अपराधियों के चुंगल में बुरी तरह से फंस चुके हैं, एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, जहां पर कि हम उन्हें अपने बोर्ड से तो चुनते हैं, लेकिन वो हमारे प्रति ना तो अकाउंटेबल हैं, ना ही वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी बात पार्लियामेंट में कह दें, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। सो दोनों ही परिस्थितियों में उनमें इतनी हिम्मत नहीं है और उन्हें एक डर भी है कि जो थोड़े बहुत टुकड़े उनको मिल रहे हैं, कहीं उनकी प्लेट से उठा ना लिया जाए, कहीं उनको पार्टी की प्राइमरी मेंबर से जो है ना बर्खास्त ना कर दिया जाए, कहीं जो है ना उनको अगला टिकट ना दिया जाए, कहीं उनको मंत्री पद मिला हुआ है तो मंत्री पद से बाहर ना कर दिया जाए। ये ऐसे ढेर सारे भय जो है आपके चुने हुए प्रतिनिधि में है, जिसको जो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। और यही कारण है कि जो मैं बार बार कहता हूं कि चूंकि नियम कानून अंग्रेजों के जो गुलामों के लिए बनाए थे वो लाद दिए, व्यवस्था जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाई थी वो हमारे ऊपर लाद दी, और बिल्कुल सर। वास्तविकता जो है ना हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो हम जो है ना गुलाम वाले हो गए और इन गुलामों को वोट देने का पावर दे दिया है, तो हम वोट देने वाले गुलाम हो गए हैं। अब सही। वोट हम जो ले रहे हैं वो तो या तो मूर्ख बना के ले रहे हैं, या पब्लिसिटी के आधार पर ले रहे हैं, या जो है ना फ्री भी बांट के ले रहे हैं, या दारू बांट के ले रहे हैं, या पैसे बांट के ले रहे हैं, या साड़ी बांट बिल्कुल के ले रहे हैं। तो इन दोनों के लिए जरूरी है कि पब्लिक गरीब हो, इसके लिए बिल्कुल। जरूरी है कि पब्लिक जो है ना दारूखोर हो। तो अब जो है आपको गरीब रखना और दारूखोर बनाना हमारी राजनीतिक मजबूरी हो गई है। सही बात। तो अब इनमें जो अपना पर्सपेक्टिव है और जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मैं देख रहा हूं, और उस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए जो मैंने एनर्जी का सिस्टम इवॉल्व किया है जी, कि बहुत अच्छा सिस्टम किया हाँ, है। कि हम लोग जो है जो कुछ भी कर रहे हैं सब लोग अपने आप करते रहें, उसमें कोई बदलने की जरूरत नहीं है। जी पूरे 140 करोड़ लोग, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से रखते हों, चाहे वो समाज सेवा से रखते हों, चाहे क्लब से रखते हों, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के हों, चाहे वो किसी भी व्यवसाय के हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हों, हर कोई एनर्जी लेवल पे जुड़ जाए और अपने अंदर एक सकारात्मकता महसूस करे। जब आप एनर्जी लेवल पे जुड़ जाएंगे तो ना तो शासन ना प्रशासन आपके खिलाफ ना इंसाफी करने की उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। वो आपको जो है स्पेशली जब आपको जो है क्राइम फ्री भारत से थाली बजाकर, जिसको हम शंखनाद कह रहे हैं, दीपक जी। जी जलाकर जिसको हम कह रहे हैं कि आपको जागरूक करके अंधकार से जो है ना प्रकाश की ओर यात्रा होगी, और जी। वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जहां पे कि कोई अन्याय किया गया है उसमें हम जब सीधे मांग करेंगे तो प्रशासन और शासन दोनों की ये स्थिति नहीं बचेगी कि वो सही और नियमानुकूल काम ना करें। और यदि वो बिल्कुल सर। अपनी चमड़ी बहुत मोटी कर लेते हैं या अहम के कारण अनसुना करते हैं, तो फिर 2024 में उनकी हार 200% सुनिश्चित है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट? तो राइट। इस डिटर्मिनेशन से गोपाल जी यदि आप जुड़ेंगे तो फिर थोड़ा आनंद भी आएगा। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल उसके लिए पूरी तरह से संकल्पित हूँ और मैं शुरू कर दिया हूँ। तो इससे अपने अपन को जो है बहुत छोटा टारगेट हमने रखा है कि हमें अपने प्रभाव क्षेत्र में जो लोग ऊर्जावान हैं, जो लोग देश में अच्छा होना देखना चाह रहे हैं, चाहे वो उनकी एज एज कुछ भी क्यों ना हो,
चाहे वो 18 साल का बच्चा हो या जो है 80 साल का बूढ़ा हो, बुजुर्ग। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, उसमें यदि उसकी सोच ये है तो हम उसे लोहा कहेंगे। और आप उसे ऊर्जाकृत करके अपने संकल्प के साथ, बहुत छोटा सा संकल्प है कि हमें हर दिन 10 ऊर्जावान लोगों को ऊर्जाकृत करना है और संकल्पित करना है और अपने अभियान से जोड़ना है। जोड़ना। और यही जो है वो आने वाला काम उसको करना है। बिल्कुल। ठीक है ना। और यदि वो ऐसा करता है तो हम 9 दिन में ही बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। और देखिए, ऑन एन एवरेज हमें 50 लोगों को ही जोड़ना है और समय 9 दिन है। 50 लोग 9 दिन, ऑन एन एवरेज 5-6 लोग पर डे का 5-6 कहलाया। लोग, बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो यदि हम 5-6 लोग ऊर्जावान लोग या 50 लोग ऊर्जावान लोग, जितनी हम जो है ना उससे जुड़े रहे हैं, इतने लोग तो हमारे परिवार और मित्र और कुनबे में ही हो जाएंगे। जी बिल्कुल। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो टीम है अपने पास और टीम अच्छा काम कर रही है। आईटी की टीम भी है हमारे पास और संस्था का काम चल रहा है। तो उसमें इसमें हमें बहुत अच्छी शक्ति मिलेगी। करेक्ट। तो जहां आपको लगता है कि ये टेक्निकल गाइडेंस हम आपकी टीम को दे सकते हैं, तो योर टेक्निकल टीम वर्क टू जी बिल्कुल बिल्कुल। रियली मेक दोज प्रोविजंस इन योर वेबसाइट एंड इन योर ऐप, राइट। एंड देन जो है देयर कुड बी ए टोटल इंटीग्रेशन। जो क्राइम फ्री ओके। भारत के वॉलंटियर है वो आपके वॉलंटियर हो जाएंगे, बिकॉज यस सर, यस। यू माइट बी एनजीओ, एट द सेम टाइम यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्राइम फ्री भारत अभियान आल्सो, ओके। मिशन आल्सो, राइट। जी सर। तो चलिए वर्मा जी, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर और मैं मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लिए इतना सोचा है और मैं बस इस पे लग जाता हूँ। तो बस एक मैसेज आप मुझे टाइप करके थोड़ा सा अपना दे दीजिएगा, जिससे कि मैं मैसेज के साथ आपका फोटो अपने जो वेबसाइट पे संरक्षक के तौर पे लगा सकूं, जिससे कि जरूर जरूर, और उसमें एक मैं जो है एक अच्छा सा मैसेज ड्राफ्ट करके हाँ आपको एक देता हूँ, आप ठीक है। सोसाइटी और समाज के लिए जो एक अच्छा सा हाँ मैसेज भेज हाँ, दीजिए और एक अच्छा सा फोटो जो हम उसमें लगाएंगे वेबसाइट पे। जरूर जरूर जरूर। और उसी के साथ ही हम फिर शेयर करेंगे और उसमें आपका जो क्राइम फ्री भारत के साथ साथ हमारा ऐप का लिंक भी होगा। जरूर 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 जरूर। जिससे कि हमारी टीम भी तुरंत उसको वो करेगी और इसके आगे भी वो फिर फॉरवर्डिंग भी पे भी लग जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, तो इस वार्तालाप को जो है एक साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जी जी हमें जी विश्वास आपको है कि दिस विल कन्वर्ट इनटू ए टीम वर्क। और जी हमें सर। अपने आसपास और जितने भी एनजीओज हैं, समाजसेवी संगठन हैं, उनकी जी सूची बनाकर उनको जोड़ना है। हम इस सामूहिक शक्ति के और सामूहिक ऊर्जा के माध्यम से ही वर्तमान की जो आसुरी राजनीतिक व्यवस्था हो गई है, तब हम उसका सामना कर पाएंगे। हम में से कोई भी व्यक्ति जी अपने आप में जो है इस आसुरी व्यवस्था का सामना करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसे 75 साल का भोजन मिल गया है। अब ये महाशक्तिशाली बन गया है जी और इसने असुर और दैत्य का रूप धारण कर लिया है। इससे लड़ने के लिए हमें एक बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जी हमें बिल्कुल। ढेर सारे चंद्रगुप्तों की आवश्यकता होगी। और जी उन चंद्रगुप्तों की पहचान का हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा है कि प्रतिष्ठा पॉइंट। तो जो यस जितनी एनर्जी से लगेगा और उसके जितने ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, प्रतिष्ठा जी पॉइंट के आधार पर ही आगे जो है जिम्मेवारियां सौंपी जाएंगी। तो जी मैं बिल्कुल वर्मा जी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पॉइंट के प्रति भी शुरू से ही सतर्क रहें, बिल्कुल बिल्कुल मैं राइट। शुरू जिससे करवाता हूँ मुझे जो बिल्कुल। है आपको बड़ी जिम्मेवारी देने में कोई तकनीकी बाधा ना हो। कहीं मैं जी अपने बचनों के कारण ही जो है अपने उसमें वो कैद होके कि भाई वर्मा जी आप हैं बहुत भले इंसान, लेकिन चूंकि जी आपके जो है बिल्कुल बिल्कुल प्रतिष्ठा पॉइंट कम है, सस्ता फाइन नहीं। जी लिहाजा जो है मैं आपको जो वो जिम्मेवारी, जिम्मेवारी नहीं हाँ देना चाहता था जो या आपकी सोचा था। जिम्मेवारी नहीं, जो जिम्मेवारी आपको आपके अनुभव, आपकी कर्मठता, आपके डेडिकेशन, आपके कार्य के कारण मिलना चाहिए, वो मैं जी आपको दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने हाथ बांध दिए हैं कि ये नहीं नहीं बहुत जिम्मेवारियां अच्छे। सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जिनके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा होंगे।
लिहाजा ठीक। मैं हर दिन ये मैसेज सभी को भेजता हूँ कि भाई साहब ध्यान रखो, प्रतिष्ठा पॉइंट बहुत जरूरी है, भविष्य में यही सभी जिम्मेवारियों का आधार बनने वाला है। तो कोई बहुत गुणी है, उसके गुण की तो जरूरत नहीं है ना। जी अपन ने जी। जो इतने सारे मॉडल बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, लगे ही हुए हैं ना अपन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपन अपने लेवल पे काफी कुछ कर पा रहे हैं। जो लोग इसमें मदद करें वो भी अच्छी बात है, लेकिन सब इस देखिए, यदि आप ऊर्जा के माध्यम से यदि आप पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, तो ये जो कवायद अपन कर रहे हैं, राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र के रिसोर्सेस के आगे ये काम 3 महीने से ज्यादा का नहीं है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे। 6 महीने, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो सवाल बिल्कुल। जो है उसे करने का नहीं है। यदि अभी आप करेंगे तो आपका जो है ना जान निकल जाएगी, और आप फिजिबल होते हुए भी उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उन चीजों को इकट्ठे ही नहीं कर पाएंगे, लॉजिकली नहीं ले पाएंगे, उसमें जो है ना वो कानून की शक्ति नहीं होगी। जी जी लिहाजा बिल्कुल। इसके लिए बहुत जरूरी है कि या तो हमारे आज के चुने हुए प्रतिनिधि हमारी भावनाओं को समझ कर ऐसी व्यवस्था जमीन पे उतारें, लेकिन उनके आपराधिक रिकॉर्ड और अपना पुराना रिकॉर्ड, जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार से लेकर हर चीज में लिप्त हैं, ये बड़ी दूर की कौड़ी लगती है। लिहाजा सही बात। हमें दूसरे रास्ते को जो है ना भी साथ में चल के रखना पड़ेगा कि यदि ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम अपने प्रतिष्ठा पॉइंट, ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट वाले महा ऊर्जा केंद्रों को जी एज ए प्रतिनिधि उतारेंगे, और संयुक्त शक्ति से संकल्प के आधार पर बिना चुनाव प्रचार के उनको जिताएंगे, और फिर पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर वो सब आमूल चूल व्यवस्था और परिवर्तन करेंगे। बहुत बढ़िया। राइट। तो एकदम राइट। तो आप जो है पूरी फिलॉसफी से कहाँ तक सहमत हैं? मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ सर। बस चलिए तो बस लग जाता हूँ इस में अभियान में। आप मुझे थोड़ा एक मैसेज, समाज के लिए एक मैसेज, और आप एक अच्छा सा फोटो आप अपना दे दीजिए, जिससे को मैं उसको लगा के और उसी के साथ फिर अपना लिंक वो लगा हम के अलग से आप सब। 1-2 दिन का समय लेके अच्छा सा ड्राफ्ट करके कोई आपको कोई भेजेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं शुरू कर दे रहा हूँ। हाँ, और अपन आपने ऑलरेडी चूंकि जुड़ चुके हैं, अपनी टीम को जी जी। जोड़िए। और बिल्कुल शुरू कर। जो अपन ने संकल्प लिया है कि हमें हर दिन 10 लोगों को जोड़ना है 9 दिन के लिए, और जी ऑन एन एवरेज 50 लोगों को जोड़ना भी पर्याप्त है, लेकिन वो चंद्रगुप्त होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, और जी। उन्हें यही संकल्प जो है हमारे सब जो है चंद्रगुप्तों को भी लेना है। फिर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। जी जरूर करता हूँ। राइट। करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे। जय हिंद, जय वंदे मातरम। अच्छा, एक काम आप और करिए गोपाल जी। जी जी सर आप जी। जो है वो टीचमेंट ऐप का हमने आपको डिटेल भेजा था, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। आपने भेजा है सर?